Good morning from Pangong Lake. Man, it's so huge and beautiful. Wow, just look at this view. ये है नज़ारा पैंगोंग का फ्रॉम मैन विलेज जहाँ पे हम ठहरे हैं। ये है टेंट्स यहाँ पे और वहाँ पे है डाइनिंग हॉल। हम इसमें रहे। प्राइस ज़्यादा नहीं है, 1000 पर हेड है। टेंट का पता नहीं, बट द व्यू इज़ जस्ट अमेजिंग। अभी पानी के पास जाना है, लेट्स गो देयर। बाइक्स रेडी हो रहे हैं, वार्म अप एंड देन लीव। टाइम इज़ 9:20। अभी पैंगोंग लेक के नज़दीक जाके थोड़ा घूम के देन वी विल बी heading towards Leh. Pangong Lake is at 4,200 meters and this was the highest stay we ever had like the whole night. रात में थोड़ा uncomfortable feel हुआ लेकिन got good sleep. The water is so clean, so pure, and look at these clouds. कल शाम को आइस कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे थे, बट आज कुछ भी नहीं दिख रहा है। एवरीथिंग इज क्लाउडी। और हम जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, तब स्नोफ्लेक्स गिर रहे थे। It snowed for almost 10 minutes. I didn't record the video because I didn't had phone or camera. तो यही प्लेस है, आई थिंक सो, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं। द शूटिंग वॉज डन 3 Idiots का, सो थोड़ा नज़दीक जाके देख के आएंगे। सो दिस इज़ द प्लेस और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है ये पार्ट। इट्स टाइम टू से गुड बाय। फिर से आएंगे। इस बार एक्सप्लोर करने का नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ड्यू टू मैनी रीजंस। दिस इज़ द लेक फ्रॉम टॉप, लाइक इट इज़ सो ह्यूज। हम ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर से आ रहे हैं वहाँ से, एंड स्टिल देयर इज़ 6 किलोमीटर्स टू गो। पैंगोंग लेक इज़ 30 to 40% इन इंडिया एंड रेस्ट इज़ इन चाइना। It is freezing cold, but एकदम मज़ा आ रहा है। अब इसको भी रेन कवर चढ़ा देते हैं। आई थिंक ले जाने के बाद वहाँ पे बारिश नहीं होगा। The only thing which is hitting me is the Changla Pass. Changla Pass is actually a bit risky. वहाँ पे रोड सही नहीं है। Once that is done, it is like good road to Leh. Finally reached Durbuk area and यहाँ पे आने के बाद cell tower मिल गया। Oh my God! As I was driving through the clouds, it was a different experience because कभी पहले नहीं चलाया था। कार में गया था but not on bike, लेकिन इस बार बाइक में बहुत ही मज़ा आया। और अभी ऊपर चांगला पास है while going to Leh। मुझे वहाँ पे भी क्लाउड्स नज़र आ रहा है। दैट मीन्स फिर से लगेगा हमें लाइक क्लाउड। वेटिंग फॉर माय फ्रेंड्स। अभी भूख बहुत लग रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट बहुत कम किया है। तो 1 प्लेट मोमो और 1 कॉफ़ी बस। बीच में फिर से कुछ ना कुछ खाएंगे। तो यहाँ का फेमस यही है। द टाइम राइट नाउ इज़ 1 o'clock और दुर्बुक से अभी निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 hour का ब्रेक लिया है
have to come at least once on two-wheeler. Otherwise you won't feel the adventure experience. I never make promises, cause I don't keep them. I already miss you. I never make promises, cause I don't keep them. I already miss you. Wow, just look at those mountains, guys. Shining bright. Changla Pass is also one of the top passes. Let's see snow hai ya nahi wahan pe. I was continuously driving with the visor open, right? So due to which my nose got completely numb. Even now it's numb. There is a landslide. Since last 5 kilometers it's completely off-road like this. The temperature is like very chill. The road is really bad. Wow. Awesome. So finally we reached Changla Pass, which is at 17,688 feet. Man, it is very cold here. There is a snowfall happening. I will show you. This is snowfall. No, it's not heavy. Oh, it started snowing very heavily. Wow. I don't know when we will be reaching Karu. Karu might be around 20 kilometers. एक बार वहाँ चले गए तो then it is easier to go to Leh. आज तो मौसम खराब है, पूरा स्नो फॉर्म हो रहा है. Wow, this was the only one which we missed, but अब वो भी कवर हो गया snowfall. Yeah, they are clearing it. Oh, look at this snowfall, yaar. Amazing. He's an orthopedic surgeon. Oh, He's a physician. all doctors. All doctors. Oh, nice. We are gradually getting down. Snowfall भी थोड़ा under control में है, ज़्यादा नहीं गिर रहा है, but my windshield is completely filled with snow. Even my helmet is in the same condition. Don't know. Oh, the road is pathetic, but still no issues, because at least we have this kind of situation where we can ride safely back to Leh. Wow. And pata nahi, I don't know about the Manali road, but I'm planning to do Leh to Manali in one day. Don't know how successful that would be. अगर नहीं हो पाया then I would be taking stop at Sarchu और जिस्पा. Most probably जिस्पा तक तो निकल जाना better है. Finally good roads. Oh, finally guys. I'm hoping the road would be good from here.
We have reached Karu, and this is the first petrol bunk. गुड आफ्टरनून फ्रॉम ले एंड मैं एक व्यू दिखाने वाला हूँ अभी. पूरा का पूरा स्नोफॉल हो रहा है. ये ओनर भी बोल रहा था कि स्नोफॉल नहीं होना चाहिए, बट वी आर एक्सपीरियंसिंग स्नोफॉल नॉट नियर द गेस्ट हाउस लेकिन फार अवे. कल वही डायरेक्शन में जाना है हमें टू मनाली. अभी के लिए वी आर गोइंग टू ले मार्केट. ले मार्केट अभी तक मैं नहीं गया. मनाली मार्केट हर रोज़ जाता था लेकिन ले में अभी तक नहीं गया. वहाँ जाके थोड़ा शॉपिंग करना है. वो करके देन पैकिंग ऑलमोस्ट फिर से पूरा निकाल के कर दिया है, क्योंकि अभी जो रिटर्न जर्नी में जो भी चीज़ चाहिए वही मैं ऊपर रख रहा हूँ. बाकी का सब अंदर पैक, जो गाड़ी से उतरेगा नहीं. सो अभी जाके शॉपिंग करके वो भी पैक करके देन हैव टू बी रेडी टुमारो मॉर्निंग बाय 5 AM को निकलने का प्लान है यहाँ से टूवर्ड्स मनाली. और एक ही दिन में मनाली जाने का प्लान है. सो क्योंकि बीच में सार चूजिस्मा में रुक सकते हैं, बट वहाँ पे टेंट्स रहते हैं और क्लाइमेट अगर माइनस में हुआ तो थोड़ी दिक्कत हो सकता है. सो